Good morning, students. Now today we start new chapter, that is unit number 4, journal. Okay, but before starting this chapter, we'll do some revision. So till now what we have seen. So first in accountancy, what is our first step? So first step is what? To recognize the given transaction is economic or non-economic. If it is economic, then only it is recorded in the books of the accounts. If it is non-economic, then it will not be recorded. Okay, now after recognize economic and non-economic, next step is what? Whether it is a cash transaction or credit transaction. Now is cash, then one account must be of cash, and if it is credit, one account must be of a person. Clear? Now as we know, in double entry system each transaction has two effects. One is debit and second is credit. Okay, now in each transaction there are two accounts are there. हर एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम कितने अकाउंट होते हैं? दो अकाउंट होते हैं. हमने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट होते हैं. Now after recognize all those accounts, what we have to do? We have to classify the accounts in personal, real and nominal. यानी जो दो अकाउंट्स आते हैं हर एक ट्रांजेक्शन में वो कौन से टाइप के अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल. उसको क्या करते हैं? हम क्लासिफिकेशन करते हैं. And on the base of that classification, we debit and credit respective accounts on the basis of rules of account, on the base of rules of debit and credit. Clear? तो इतना सब कुछ हमने आज तक देख लिया है. Now we have to record. This is what? This is primary function. ये सब क्या है? Basic function जो हमें अपने हिसाब से करने थे, रूल्स के हिसाब से करने थे. Now we have to record this transaction in the books of the accounts. In the books of the accounts. So unit number 4, that is what? Journal. So remember, journal is the first. Journal is the first book of the accounts. Journal is the first book of the accounts. Why? Why it is first? Question is there. Because very first time transaction of business is recorded in this journal book. यानी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं ना, उसकी सबसे पहली एंट्री किस बुक में होती है? जर्नल बुक में होती है. दैट इज व्हाई जर्नल बुक इज नोन एज व्हाट? फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स. यानी पहली बुक है जिससे हम शुरुआत करते हैं अपने अकाउंट्स की. क्लियर? तो हमें इस चैप्टर से अपने अकाउंट्स मेंटेन करना है, यानी ऑफिशियली रिकॉर्ड करना है. सो हियर अकॉर्डिंग recording process of accounting transaction based on rules of debit and credit in the first book of account is what? Journal. So this is the simple meaning of journal. ये मैंने आपको simple meaning दिया है. What is journal? अगर आपसे कोई ऐसा पूछे what do you mean by journal or what is journal, तो आपको क्या आंसर देना है? A recording process. हम क्या करते हैं? Record. A recording process of accounting transaction. कौन से transaction? Accounting transaction. Based on what? Based on rules of debit and credit. Based on rules of debit and credit. In the first book, which book? First book of accounts is known as what? Journal. So this is the simple meaning of journal. Clear? Now second, the book in which first effect of accounting transaction is made is known as journal. यानी ऐसी बुक जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन की पहली इफेक्ट देते हैं या पहली इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जर्नल, है ना. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, बिकॉज़ वेरी फर्स्ट टाइम इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज मेड इन दिस बुक. एंड नेक्स्ट, जर्नल बुक इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. आपको याद रखना है जर्नल इज विच बुक? तो जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. नाउ व्हाई इट इज फंडामेंटल? सो बिकॉज वेरी फर्स्ट टाइम all transactions are recorded in this book. So which book is fundamental book under Desi double entry system? So what is the answer? Journal. So आप ये भी कह सकते हो journal is a first book of account,
journal book is also a fundamental book of accounts. Clear? Now last, it is a such a fundamental book, it is a such a fundamental book on the basis of which, on the basis of which remaining books of accounts, रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रीपेड। इसका मतलब ये है जर्नल बुक एक ऐसी बुक है अकाउंट्स की जिसके ऊपर बाकी सारी बुक्स क्या होती है, प्रीपेड होती है। यानी अगर आपने जर्नल बुक में कोई गलती की है तो बाकी सारी बुक में गलती आने के चांसेस है। क्लियर? क्योंकि बाकी सारी बुक्स जर्नल बुक के आधार पे लिखी जाती है और उसके बेस पे मेंटेन की जाती है ना। That is what is said what it's a such a fundamental book on the basis of which the remaining books of accounts are prepared। यानी जर्नल बुक पहली बुक है, उसके बाद और भी बुक्स हमें बनानी है, जैसे कि सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, लेजर बुक, है ना। ये सारी बुक्स बनानी है, लेकिन ये सारी बुक्स किसके बेस पे बनी जाती है, जर्नल के बेस पे। That is why it is what fundamental book of accounts on which other books of accounts are maintained। यानी जर्नल बुक का बेस लेके हम बाकी अकाउंट्स की बुक क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं। So you can say journal is what first book of account, journal is also what fundamental of books of account on which other books of accounts are maintained। So this is what journal meaning of journal, this is general meaning of journal। आपको याद रखना है what is journal। okay, so now journal, so here French word jour means a day। तो journal word कहाँ से आया है, so it is a French word that is what jour, it means what a day। now from which the word journal is derived, तो जर्नल वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, अ फ्रेंच वर्ड। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जर्नल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच। नाउ मीनिंग ऑफ विच इज डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी हमारे बिजनेस में जो हर रोज ट्रांजैक्शन होते हैं, those transaction which take place every day in our business, उन सबको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। उसको क्या बोलते हैं हम, जर्नल, है ना। कि आज के दिन में सुबह से लेके शाम तक हमने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं। क्लियर? सो मीनिंग ऑफ विच इज व्हाट, डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें उसको डेली रिकॉर्ड करना है, हर रोज आज के ट्रांजैक्शन को आज रिकॉर्ड कर देना है, यानी हर रोज रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? उसको बोलते हैं जर्नल। नाउ इंग्लिश वर्ड जर्नल इज ओरिजिनली फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब जो जर्नल वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है ओरिजिनली, सो लैटिन लैंग्वेज से। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है ना। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि इंग्लिश वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, सो व्हाट इज आंसर, लैटिन लैंग्वेज। ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ इट इज व्हाट, अ नोट और अ डायरी। उसका मीनिंग क्या है, अ नोट और अ डायरी। सो मीनिंग ऑफ जर्नल क्या है, अ नोट, नोट मींस हमें नोट मेकिंग करना है। जैसे आप लोग भी नोट मेकिंग करते होंगे कि आज के दिन में मैंने क्या किया सुबह से शाम तक, तो हम नोट मेकिंग करते हैं शाम को, है ना। एक डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जर्नल, है ना। वैसे ही बिजनेस में हमने जो हर रोज जो ट्रांजैक्शन किए, व्हाट एवर ट्रांजैक्शन वी हैव डन थ्रू आउट द डे आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, दैट इज व्हाट, जर्नल। तो उसको क्या बोलते हैं, द मीनिंग ऑफ जर्नल इज व्हाट, इट इज अ नोट और अ डायरी। हम उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं और उसके क्या करते हैं, डायरी बनाते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, जर्नल बोलते हैं। नाउ जर्नल बुक इज नोन एज व्हाट, द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल बुक को हम कौन सी बुक की एंट्री बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज। क्यों इसको ओरिजिनल एंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल, यानी वो
ओरिजिनली ट्रांजेक्शन की एंट्री कहां पे होती है? जर्नल बुक में. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. Book of original entries, because very first time business transactions are recorded in journal book. That is why it is also known as what? Original entries book. So आप ऐसा कह सकते हैं journal book is what? Fundamental book of accounts, first book of accounts and original entry books of account. आप ऐसा भी कह सकते हैं. Clear? Now all the transaction, अब जो हम जर्नल करते हैं, हम जो अकाउंट करते हैं, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? सो हियर ऑल द बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. इसके अंदर बिजनेस के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर वो कैश हो या क्रेडिट हो. क्लियर? नाउ ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ डेट. इसमें हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इन द ऑर्डर ऑफ डेट. इन द ऑर्डर ऑफ डेट मींस व्हाट? द ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस फर्स्ट. द ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस फर्स्ट, दैट इज रिकॉर्डेड वेरी फर्स्ट. यानी जो ट्रांजैक्शन पहले होता है उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड होता है उसको हम उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं. यानी डे वाइज अकॉर्डिंग टू डेट. यानी जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन डेट फर्स्ट, the transaction take place on date first are recorded very first in journal book, and the transaction which take place on fifth date they are recorded after recording of transaction date number 1. यानी जो पहली तारीख को जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, और जो 5वीं तारीख को जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम क्या करते हैं? बाद में रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ डेट. इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन पहले टेक प्लेस होते हैं उसकी एंट्री पहले होती है, और जो ट्रांजैक्शन बाद में टेक प्लेस होते हैं उसकी एंट्री कब होती है? बाद में होती है. इन द ऑर्डर ऑफ डेट, डेट वाइज. कैसे? डेट वाइज. अगर मान लो यहाँ पे ऐसी डेट है फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, तो पहले कौन से डेट के ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ. ऐसा नहीं होता है कि पहले फिफ्थ, फिर फोर्थ, फिर टू, फिर वन, ऐसा आप लिख सकते हैं नहीं. यू हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर ऑफ डेट. इट इज अ रूल. ये क्या है? रूल है. क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द ऑर्डर ऑफ डेट, एंड द प्लेस where we record all these business transaction, it is known as what? Journal book. Clear? तो ये क्या हो गया? मीनिंग ऑफ जर्नल बुक. ओके? Okay, now you have to write down all these points in your notebook. It is introduction of journal. Okay, so today we have discussed what? Introduction of journal. Now tomorrow we discuss characteristics of journal and significance of journal. Okay, thank you and have a nice day.